Hi everyone, welcome to General Channel. We hope you will find it more informative and helpful. Best of luck. We have past paper, business mathematics and statistics, 2006. There is a question number one that is asking use Excel function Npv to find the net present value of one investment. When annual discount is 12%, initial cost of investment 1 year from today is 50,000. Return from first year is 5,000. Return from second year is 7,500. Return from third year is 10,000. Here we have sheet already prepared it. Actually, the net present value is a financial calculation that determines the value of an investment or project in today's dollar. It is key tool used to assess the profitability of investment project or business. एक्चुअली एनपीवी जो है निकालना होता है कि कितने पीरियड के अंदर उस प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करें तो कितनी उसकी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसी कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमारे पास हमने पहली शीट बनाई है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 थी, फर्स्ट ईयर पे ये था, सेकंड ईयर रिटर्न 7,500, थर्ड ईयर पे 10,000 और डिस्काउंट रेट 12% था। यहाँ पे हमें यहाँ बेस चार्ट फार्मूला लेना है, फार्मूले में जाना है, इंसर्ट फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पे एनपीवी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद रिटर्न रेट वैल्यू है उसकी 12%। वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद जब ओके करेंगे तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। ये आप 10 मार्क्स के हकदार होंगे इंशाल्लाह। दैट्स गुड।